डेटा कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है। आईडीएसएन 32 के द्वारा जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है pivotal power प्रदान कर descent रहा has है। begun, and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. And the lander module is propelling towards the moon's surface along the And there we have it. Confirmation. Landing burn has begun. Chandrayaan 3 committed to a lunar landing attempt. Let's listen into mission control. It has begun. We are now in the 19 minutes of terror, confirming whether we will have a successful landing here today. Let's listen back into mission During control. this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और लैंडर अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The lander module has complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही live looks at live telemetry confirming the burn is underway. अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है और सदी हुई है जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. The altitude of the lander module during the next phase, which is going to be 7.4 kilometers to 6.8 the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. The attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ये रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते You can see on your screen there, it is about to begin that curvature. It is slowing down, and it is about to begin its descent. Things are progressing nominally in this burn. We continue to listen into mission control, but they are now committed to a landing attempt. Current altitude, Chandrayaan 3, 31 kilometers. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, The performance चूंकि so एलएस far seems एक्टिवेट to be किया जा nominal. चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन के सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। You're seeing live pictures on the right side of your screen. Those are live images from the lander module as it conducts its burn. The moon coming closer and closer. Now at an altitude of about 31 kilometers. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is We are now under 30 kilometers, slowing our speed. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start.
Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. throttleable engine electronics जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, आप अपनी लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें लैंडर करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली गिविंग is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Imager is currently the horizontal velocity continuously taking photographs of the moon has been brought down, and that is also being the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. 574 kilometers. जी हाँ, The current altitude is 27 अपने आधे kilometers, as सफर can को be पूरा करते seen हुए on इस the रफ screen. ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर आप बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास। चंद्रमा के सतह से लगभग 27। And that descent now underway. You can see that curve beginning phase is the as the module descends, now passing 26.5 kilometers in altitude. The lander will be oriented speeding up but slowing such down that as both it the prepares altimeters to will be land looking on the exactly lunar towards the surface. moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. Navigation system will be given from the laser and car band altimeters. ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर जी हाँ अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब तक के आंकड़े को देख कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है, नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is. If you're just joining us, welcome here to the launch pad. Chandrayaan 3 now passing through 21 kilometers in altitude, traveling 59 meters a second and increasing in speed. But that horizontal velocity you can see slowing now under 800 meters a second. Horizontally, some incredible live views from the lander module as we are now 8 minutes into the landing burn, where the descent starts. They are now in that rough braking. That burn should be completing here shortly, and then we are now about 11 minutes away from touchdown. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड velocity को कम किया जाता है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface. Time, we can see which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. हम जाएंगे towards the attitude hold phase. इस phase के बाद where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. Where we will be expecting sensor update from the laser. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface.
The current altitude is nearly 15.2 kilometers. And the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been provided is 754 kilometers. जी हाँ, We can also see the image के दौरान that the lander 800 imager न्यूटन के camera चारों has थ्रोटल been इंजन providing. अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। कार्य को पूरी तरह से अब तक लैंडर लगभग और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग देख सकती 10 किलोमीटर के आसपास है। जो करंट आल्टीट्यूड है जी हाँ चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग होल्ड फेज भी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं लैंडर फेज ने पार कर लिया है। लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है। अभी हम ये देख इस फेज के उपरांत लगभग लैंडर की ऊंचाई मीटर लगभग हो जाएगी। 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 We can hear from the mission operations team that the sensors and there we have confirmation they have switched from rough braking to fine braking. We are now in the final phase, which is going to continue of this for landing 3 burn. minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लगभग 3 लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 800 मीटर डाउन रेंज भी लगभग शून्य और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी we can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange travel is nearly 831 kilometers. We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. And as we're in that final descent, we're removing those clocks and we are going to be watching as we 40 days ago, 3 hours, 23 minutes, 15 seconds ago launched, and we are now on the verge of landing. Let's listen to the Prime Minister. 1 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent.
which is going to be the vertical descent phase or the local We are navigation less phase. than 1 kilometer from the surface. Traveling now less than 5 meters a second horizontal. The lander now beginning to pitch vertically, finalizing its landing. हम लोगों ने तीसरे This चरण is को it, भी the final बहुत ही minutes. सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी And there we have confirmation that they are now in a hover indicates at that, 800 meters. The landing till now burn has the been performance has completed. been nominal. The final descent is now We are in the underway. vertical descent phase Chandrayaan 1. 3 is now using local navigation, confirming its landing The target. altitude is being brought down from 800 meters Here we go. and we are nearing and approaching the lunar surface. Is being brought down from 800 meters. जी आप अपने स्क्रीन And पे we are देख nearing सकते हैं कि and लैंडर approaching क्या the lunar surface. हाइट लगातार कम होता जा रहा है जी। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के फेज के दौरान और लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर We are above We the are now landing coming site. up to 500 The meters from the horizontal lunar as well as surface, the vertical descending about velocity almost 9 is now meters a being second. constantly reduced, 450 meters to the surface. and the lander module has begun its descent towards the landing site. Is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। अपने स्क्रीन पे इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई We are approaching 150 meters to the lunar vertical descent surface. phase 2, which The will Vikram lander have now the in lander final module local hovering navigation, at nearly descending 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड You can see that the lander is now retargeting and it has begun its descent 130 meters to the lunar surface. As expected, the 120 meters. going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं We should be about 100 meters from the लैंडर lunar की ऊंचाई surface. लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। 75 meters. कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. Zero velocity, vertical and horizontal. We are लैंडर hovering, की and now we are वेगमान को कम किया जा रहा approaching the moon's है surface. और हम अब लगभग 50 मीटर से भी धीरे कम 60 meters to the lunar surface. वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग we can 50 see the मीटर से Honorable भी Prime Minister कम आ चुके Shri हैं। Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically 30 looking meters, at the 25 visuals. meters, 23, 22, 20, 19. Stand by for confirmation of landing. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Let us all wait to hear from the Secretary लैंडर मॉड्यूल Department पूरी of तरह Space से and Chairman ISRO, सेफली और सॉफ्टली Shri S. चंद्रमा Somnath. के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि Chandrayaan 3 is officially on the lunar surface. The hard work of the entire Congratulations ISRO to community India. has come The to entire team, fruition. let's listen in.